Welcome to the Darwin Platform Group of Companies presents Army Day 2022 against all odds, the CRPF Mahila Battalion in association with Republic TV. The Armed Forces as an institution has often been regarded as a male-dominated institution. But however, that has been changing. The number of women who have been inducted into the Armed Forces in the year 2021 has increased manifold. Working in the armed forces isn't any easy task. It requires a lot of zeal, a passion, a lot of energy. Women in the CRPF come from various backgrounds, cultures, as well as states. But they are all bound by a singular passion, the passion to serve the country. Women are breaking the glass ceilings in several fields. But what is it like to work with the CRPF? What are the experiences that women have in the CRPF? To know more about this, to know about their unique journey, the challenges back home, and also the inspiration behind joining the armed forces, we have with us an Army insider and expert, Major Gauravaria. Hi, I'm Major Gauravaria and I'm at the Shaheed V.T. Matthew Parade Ground here in Bangalore. To my left and to my right are young women recruits who are now part of a new raising, the Mahila Battalion of the CRPF. They come from diverse backgrounds. You can find young recruits from every state and every union territory of India, but there is a common thread, the burning desire to serve the motherland, the burning desire to wear the uniform. And what is the other common thread? The other thread is almost everyone was told by this society that they were not good enough to wear the uniform because they were women. You should hear the stories, and viewers, you will hear their stories. And when you hear the stories, I can assure you, your hand will go up in a salute to them. Viewers, today I'm joined here by Mrs. Vijaya Dhondiyal, Commandant 240th Battalion of the Central Reserve Police Force, which is a Mahila battalion. And I'm going to be speaking to her because she is the leader of this battalion, the battalion which will, it's a new raising. It's going to complete its training, the basic training, after which it will be launched into operations. Ma'am, welcome to Patriot. Thank you, sir. I would like to ask you, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो महिला बटालियन है, ये जो कॉन्सेप्ट है महिला बटालियन का, ये कितना पुराना है, ये महिला बटालियन क्यों बनाई जा रही हैं, कितनी बन चुकी हैं, ये कौन सी महिला बटालियन है नंबर के हिसाब से, इसके बारे में जरा बताइए. Actually, it was in year 1986 when first Mahila battalion was raised. And it was basically to deal the Mahila agitators, women agitators during various agitations and other law and order problems. All right. And since the raising of first Mahila battalion, now we have 6 exclusive Mahila battalions, including the this one, 240 Mahila battalion. 240, yes. All right. And the contribution of our women personnel has been outstanding, and they have served everywhere, be it in J&K, Northeast, and even overseas deployment in Liberia under UN mission. All right. They were also part of IPKF mission in Sri Lanka, and in fact, you'll be glad to know that first recipient of Ashok Chakra of CRPF was in the Parliament attack. Yes, was Constable Kamlesh Kumari, who was martyred during the Parliament attack in 2001. And she got the Ashok Chakra. Yes. Yes. And I think now with the decision of government to increase the women workforce to 33% in CAPFs. So it will certainly going to increase manifold in the near future. I think it's a very welcome decision also. Yes, and their role will not be limited to tackling only women, but it will be extended to other duties and other internal security related duties along with their male counterparts. So tell me something about yourself. When did your journey with CRPF start? Okay, actually my father, he was in CRPF. All right. Yeah, so I can say that since childhood I was attracted towards uniform services. आपने देखी CRPF? Yeah, yes, I was born and brought up in this CRPF only. All right. But with the passage of time and seeing my other friends also, I also started pursuing other career options like medical or banking services that are considered safe and suitable options for girls. Yes. But that charm towards uniform services was always there, and it kept pulling me towards it. All right. So after my completion of my graduation, I
decided to join CRPF, and I informed my parents about it, but they were not comfortable with that. Yes. Especially my father, because since he has seen the life of a CRPF officer in CRPF, he has experienced it. Frequent movements and being away from family for long durations. So he didn't want me to go through all that. But their responses didn't deter me, and I stood firm on my ground. But after joining the force, after getting commissioned as an officer in CRPF, or after passing out from the academy rather, did you face any sort of discrimination or something in which your colleagues must have said that ये लड़की है इसको मत भेजो, जो male officer है उसको भेज दो? हाँ जी, बिल्कुल. In fact, after passing out from that training academy, I joined my first unit in Aligarh. That was 104 RF, and the attitude of fellow colleagues and senior officers was, I won't say they were discriminating, it was more of overprotectiveness. Yes, towards me. जैसे घर में होता है. हाँ जी, इसको कहीं नहीं बाहर नहीं भेजना, आप यहीं headquarter में रहो. I was given duties in headquarter. Okay. Not posted to any company, service company. And in spite of my constant pleas with the unit commanding officer, he never sent me out for deployment with the troops. But I think now that has changed a lot. उसके बाद मुझे लगता नहीं कि ऐसा मुझे कभी फील हुआ. That was initially for 2-3 years that I faced this type of discrimination. And because उनके लिए भी शायद नया ही होगा. Yes, very true. They also have not seen a lady officer. They're seeing for the first time. Yes. The situation has changed. Yes. So many women are joining forces. Yes. CAPF, be it CRPF, BSF. And they are being deployed in different places, be it in JNK, northeastern states, even Naxal areas. Yes. So that attitude of male counterparts, that is also changing. They are becoming more accommodative. Yes. And they are not looking at you as women, but as officers, commanders first. That is very important. Yes. And thank you very much for joining us on Patriot. Thank you very much, ma'am. Viewers, I was speaking to the Commandant 240, and one thing I want to tell her, because she is now, people look at her as a role model. And I want to tell, for all those young girls, young women who are watching this program, many a time, when there is a difficult circumstances, your male colleagues will tell you कि आप पीछे हट जाओ, हमें काम करेंगे, ये काम लड़कियों का नहीं है. वो आपके मेल कॉलीग्स झूठ बोल रहे हैं आपसे. वो काम आप उनसे अच्छा कर सकती हैं. सिर्फ थोड़ा हिम्मत, थोड़े हौसले की बात है. और ये बात मिसेस विजय ढोंडियल प्रूव कर चुकी हैं. इनको भी समाज ने रोका. The society stopped her from joining CRPF. She joined. She's doing very well, and she's the first commanding officer of 240 CRPF battalion, the Mahila battalion. मेरा नाम अनिता वी. मैं 1997 में मैं CRP में भर्ती हुआ. अभी 21 साल सर्विस हो गए, और इंस्ट्रक्टर के रूप में 12 साल इनको ट्रेनिंग दी है. और 1 साल UN डेपुटेशन गए थे वेस्ट अफ्रीका, लाइबेरिया में. मैं CRP में बचपन का मेरा एक सपना था पुलिस में आने के लिए. मेरा 3 भाई है, मैं एक ही बहन है, घर की छोटी थी. लेकिन कोई पसंद नहीं करता था मेरे को CRP में भेजने के लिए. बचपन से मैं सेल्फ अपने आप डिपेंड करके जीने के लिए इच्छा करती थी. इसलिए मैं जब मेरा 10th पास होने के बाद मैं खेत में शनिवार और संडे खेत में काम करने के लिए जाती थी. उस पैसे से मैं कंप्यूटर भी सीखा था. घर वाला सभी मना किया था CRP में, क्योंकि महिला के लिए CRP के पुलिस के नौकरी उन लोग बहुत ये सोचा था, फैमिली लाइफ नहीं है. फिर भी वो बच्चे को रखना मुश्किल होता है, क्योंकि डिप्लॉयमेंट JNK, छत्तीसगढ़, आसाम, मणिपुर, मैं केरला की रहने वाली है. उधर जाने से बच्चे को देखभाल नहीं हो पाएगा करके उन्होंने मना किया. लेकिन एक हफ्ता घर वालों को स्ट्राइक करने पड़ा CRP में भेजने के लिए. फिर CRP में आने के बाद मैं मीटिंग गए थे, तब मेरा पड़ोसी सब आके पूछा असली राइफल है या नकली राइफल है आप लोग. मैं बोला असली राइफल से फायर कराता है. तब उसके बाद बहुत लोग मेरा गांव से अभी CRP में आ गए.
I'm here and with me are so many members of this new raising, this Mahila battalion, and they're learning the rudimentary skills that are required of any soldier. Now, after passing out from here, they'll be posted all over the place. Some will go to Kashmir, some will go to the LWE, the left-wing extremism areas of Chhattisgarh and beyond, and they're learning essential basic skills of grenade firing. This is what they're learning here, viewers. This is a HE-36 grenade. This is the lever. This is the pin which is taken out. And once you take out the pin, you can keep the lever depressed and the grenade will not explode. But if you let go this, then boom. Though this is a dummy grenade, nothing to worry about. This is the base plug of the grenade. And inside this, the igniter switch comes in. The .22 cap and the igniter switch inside here. So you cover it back, the base plate goes in again. And these are dummy grenades, they are no longer functional, but this is what they are taught with. So viewers, this was about the grenade, and now the Ustad, the instructor in charge, who is teaching them the rudimentary skills of soldiering, especially firing a grenade. This is what the class is about, and I'm going to introduce you to her. Her name is Pratima Sahu, and she's their instructor for the day. आप एक बात बताइए, इनकी कितने वीक्स की ट्रेनिंग खत्म हो गई है अभी? 31st रनिंग है सर। 31st वीक रनिंग है। आप इनकी इंस्ट्रक्टर हैं और ये जो बटालियन है ये पूरी महिला बटालियन है। कैसा लगता है इनको ट्रेन करके, क्योंकि ये तो काफ़ी टाइम से सीआरपीएफ में महिला बटालियंस हैं और ये शायद छठी बटालियन है महिला जो प्योर महिला बटालियन रेज हो रही है। कैसा लगता है इनको ट्रेन करते हुए? नई लड़कियां हैं, अलग से जज्बा है सर, हर एक नया बटालियन क्रिएट करना एक हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हाँ। और इनके अंदर एक जो आए थे घर से एक होम सिकनेस था, अभी आने के बाद इनके अंदर अपने आप ही एक जवान की फीलिंग्स आने लगी है। इनकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं जैसे ट्रेनिंग के वक्त? जैसे आप इनको ग्रेनेड के बारे में सिखा रही हैं, अब ये जाके एक्चुअल ग्रेनेड फायरिंग करेंगे भी थोड़े समय के बाद ना, ये वेपन्स की फायरिंग कर रहे हैं, क्या वो उत्सुकता पूरी है जानने की? उत्सुकता पूरी होती है, लेकिन जब ये जाएंगे, इससे पहले भी हमने ट्रेनिंग दी महिला बटालियन को। हाँ। सिखलाई में और इम्प्लीमेंट में बहुत फर्क है। बिल्कुल ठीक बात है। ये क्या है, ड्रिल ग्रेनेड है, इनके अंदर डर नहीं रहती है। हाँ। लेकिन जब इग्निटर सेट को हम इंसर्ट करते, जब प्राइम करते ग्रेनेड को, इनके अंदर एक भय आ जाता है। ऐसा लगता है कि इनका 4 सेकंड का फ्यूज है, कहीं नीचे ना गिर जाए, कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, ये मन में इनका बहुत सारा क्यूरियोसिटी रहती है। और ग्रेनेड से एक्सीडेंट होते भी बहुत हैं। जी जी बिल्कुल। बाकी इनको हम बताते हैं, कोई डरने वाली बात नहीं, 4 सेकंड बहुत होती है थ्रो करने के लिए। तो उनके मन में क्यूरियोसिटी बहुत है, डर भी है, और जब वो जाएंगे रेंज में तभी पता चलेगा सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप जिस तरीके से ट्रेनिंग कर रही हैं हमें बहुत गर्व है, और आप इनको बिल्कुल ऐसा कर दीजिए कि बिल्कुल सॉलिड यहाँ से लोहा बन के निकले। थैंक यू और धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। CRPF is the only paramilitary force in the country to have 6 Mahila battalions. These empowered Mahila battalions have not only brought laurels to the force, but have also made the country proud time and again. We'll bring you many more insights on the CRPF Mahila battalions on the other side of this short break in Darwin Platform Group of Companies presents Army Day 2022 against all odds. The CRPF Mahila Battalion in association with Republic TV. Welcome back. You're watching Darwin Platform Group of Companies presents Army Day 2022 against all odds, the CRPF Mahila Battalion in association with Republic TV. From the first CRPF Mahila Battalion formed in 1986 to now, these women officers have demonstrated the ability beyond measure to serve the nation. Let's take a look at the growth of women officers in the CRPF Mahila Battalion. At least 34 of them were inducted into what is considered to be the elite task force of the CRPF, the Cobra unit. They were brought into it, they were given Naxal operation trainings, and not just that, also jungle warfare training was imparted to these women personnel who joined the elite task force. This only goes on to indicate that women in CRPF have overcome all sort of challenges that come their way, be it location or for that matter all the other challenges that come their way.
Viewers, you've seen these young recruits doing PT, weapons training. But truth be told, it is here on the drill square that soldiers are made. All over the world, anywhere where you go, if you see a soldier talk in a certain manner, you see a soldier walk in a certain manner, rest assured, he or she has been taught that on the drill square. Today we have with us, their drill instructor, and I'm going to speak to that lady, Assistant Sub-Inspector Shivratna. And let's speak to her and let's find out how she trains and what she's training these young girls who want to be soldiers tomorrow. आप बताइए, ये जो यहाँ पे रिक्रूट्स हैं, ये अभी लड़कियाँ हैं, रिक्रूट्स हैं, कल ये CRPF में जाएंगे, ड्रिल स्क्वाड में उनको क्या सिखाते हैं आप? सर डिसिप्लिन सिखाते हैं, उसके बाद उनको एक साथ काम करना सिखाते हैं, चलना फिरना सिखाते हैं, मतलब सीनियर को कैसे बात करना है, कैसे रिस्पेक्ट देना है, सब कुछ सिखाते हैं सर। शुरू में जब आते हैं तो क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, क्या क्या परेशानी आती है, क्योंकि ये तो सिविलियन हैं, ये बाहर से आए हैं, अभी इनको सिखाना है, आपको इतना टाइम हो गया CRPF में, तो इनको शुरू में क्या इनके साथ परेशानी आती है? सर शुरू में तो इनको वेपन्स के बारे में पता नहीं रहते हैं, या इनको वेपन्स कैसे पकड़ना है पता नहीं रहते हैं। जब ये लोग आते हैं हम एक एक को सिखाते हैं, ऐसे पकड़ना है वैसे पकड़ना है। जब ये लोग घर से आते हैं तो थोड़ा घबराहट भी होते हैं, हथियार तो पहली बार पकड़ रहे हो तो किसी को भी घबराहट होते हैं। अब ये लोग बहुत जल्दी कैच भी पकड़ लेते हैं, ऐसे नहीं है, लड़कों से बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं और बहुत इंटरेस्ट से सीखते हैं। और जो हम सिखाते हैं उसको लाइन में भी जाके नाइट में फिर ये करके सीखते हैं, खुद प्रैक्टिस भी करते हैं? हाँ, प्रैक्टिस भी करते हैं। How these girls, supported by their families, mostly supported by their families, their fathers and mothers and their siblings, and irrespective of the pressures from society, they have come here to prove themselves, and all of them have picked up these traits of soldiering very fast. And it's always easy when you want to do something, and these young girls, they want to do something not just for themselves, not just for the families, but also to prove to society, which once upon a time said that you can't do this, only boys can. Viewers, today I have with me Ms. Nishamol C, who is a Deputy Commandant in the CRPF. She's currently with the Mahila Battalion. And as you can see behind her, all these young recruits, lady recruits, who are undergoing their training. Now I'm going to speak to Nishamol C, and she has some very exciting stories to tell. I'm sure you would want to hear these stories. And I wanted to ask you, first of all, tell us about these ladies, young ladies who are recruits. ये कितने हैं यहाँ पे, कितने हफ्ते हो गए ट्रेनिंग करते हुए, टोटल कितने हैं ये लोग? यहाँ पे टोटल रिक्रूट्स हैं जो अराउंड 650 का है, और हमारे एक सेकंड बैच में वो लगभग 20 है। उसके बाद में हमारा जो ट्रेनिंग चल रहा है अभी 33 वीक्स स्टार्ट हो रहा है। अच्छा। तो इसमें हम लोग का आधा ट्रेनिंग ख़त्म हो चुका है। ओके। तो इसमें ऐसा है कि बहुत बैकवर्ड जगह से आए हुआ लड़कियाँ हैं। अच्छा। कि बहुत लोगों ने स्ट्रगल करके इस फोर्स में ज्वाइन किया, जबकि इनको कि गांव वाला जो फ्रेंड्स थे सब लोग मना करने के बावजूद भी ये लोग एक चैलेंज के साथ फोर्स में भर्ती हुआ। इसीलिए इनका मैं देख रहा हूँ कि इनका जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है वो बहुत ऊंचा है जी। कहीं ना कहीं लगता है ये लड़कियाँ किसी ना किसी को प्रूव करने के लिए आई कि हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल। जब ये लोग आए थे इनको तो शूज़ भी पहनना नहीं आता था। कुछ ऐसे भी थे जिनको शूज़ नहीं पहनना था। बिल्कुल, जो एकदम बैकवर्ड गाँव से जो आए थे। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। The young recruits have completed this very difficult 16-point battle obstacle course, and now they're here, panting, tired, but happy because of the success that they've achieved. I'm going to speak to them. I want to speak to a couple of them and find out, what this means to them. Many of them are educated, highly educated, yet they left, careers that could have happened, and they left to join the CRPF. Come, let's listen into their stories. आपका नाम क्या है? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम पल्लवी सी लिंड है और मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, महाराष्ट्र से।
और आपने कितनी पढ़ाई करी है पल्लवी? सर मेरा ग्रेजुएशन तक पढ़ाई हुई है, बीएससी। बीएससी से आपने ग्रेजुएशन करा। आप सीआरपीएफ क्यों आपने ज्वाइन करी? सर बचपन से ही मतलब फोर्स के तरफ बहुत इंटरेक्शन था, उसकी वर्दी वगैरह वगैरह, अच्छा। इसलिए जब मौका मिला तो आ गए। तो घर वाले क्या समझते हैं अभी? घर वाले अच्छा महसूस करते हैं इसको? सब मेरे पापा तो सर हमेशा मुझे समझते थे, बेटी का भी उन्होंने सोचा ही नहीं सर, हमेशा मुझे बेटा समझते थे। हाँ। उनका भी एक सपना था कि मैं आगे चल के कुछ करूँ। हाँ। तो वो तो बहुत हैप्पी है सर। तो आपको क्या अभी जैसे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि और भी जो बच्चे हैं, हाँ, या जो छोटे हैं आपसे, क्या आपके पास आते हैं और बोलते हैं कि हमें भी ज्वाइन करनी है, बताओ कैसे करा? हाँ सर, पूछे थे उनको भी अभी लग रहा है कि लड़की भी पीछे नहीं रह सकती है। हाँ। तो लड़कियों के मन में भी और जोश बढ़ गया है सर। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। 577। यस सर। जय हिंद। जय हिंद। आराम से। आप बताइए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं? मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ और मेरा नाम थ्यूलिन फालुंग है। ओके, अच्छा, तो आपका सीआरपीएफ में आना कैसे हुआ? एक्चुअली मेरा एक ड्रीम था, मीन्स यूनिफॉर्म पहनना। पहले व्हेन आई वाज मैं क्लास 5 में थी तो मुझे नर्सिंग बहुत अच्छा लगता था, बिकॉज एक ही ड्रेस का होता था, वाइट ड्रेस, सो दैट्स वन ऑल्सो यूनिफॉर्म। सो उसके बाद में मैंने आफ्टर क्लास 10 नर्सिंग ज्वाइन करने की कोशिश किया, बट सक्सेस नहीं हुआ। अभी मैं यही अपना सपना पूरा करने के लिए ये फोर्स में ज्वाइन किया। तो जो सफ़ेद वर्दी थी अब वो खाकी हो गई, yes. है ना, और कॉम्बैट की भी हो गई है। हाँ. कॉम्बैट ड्रेस भी आपने पहन ली, yes. मतलब दोनों वर्दी ऑफ इक्वल रिस्पेक्ट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। एंड आई प्रे टू गॉड कि आपको सक्सेस मिले। एंड ख़ास तौर से ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वर्दी पहनना सबके बस का नहीं है। जय हिंद। जय हिंद। Viewers, to speak to these young ladies here who are recruits, and all of them have typically similar stories, and they are respected because today people feel that what they said they will do, they have done, and nobody can say that it was just a dream, because for them now the dream is a reality. People have become minor celebrities in their own neighborhood, and people come to them, people invite them over for lunch to their houses and ask them, how can we join the CRPF? How can we join the uniform services? And these are actually, you look at them, what you see are recruits, but they're not just recruits. These young women are actually the brand ambassadors of the CRPF. No two women officers have had the same life experiences, but each of them have faced barriers on account of their gender. They've challenged these barriers, broken stereotypes, and emerged victorious against all odds. They've made the uniform, force, and country proud. They embody the spirit of nation first, no compromise. And they are also an inspiration to all women who are watching this show. With this, we come to the end of Darwin Platform Group of Companies presents Army Day 2022 against all odds. The CRPF Mahila Battalion in association with Republic TV. Thank you for watching.